अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको लॉ वाला के बिहाफ पे कैप्सूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेलकम करता हूँ। इस कैप्सूल में हम कुछ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिलेबस को रिवाइज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a stipulation in a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate was payable upon the principal as penalty within the meaning of सेक्शन 74 नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 74 जैसा कि हमें याद है, इट टॉक्स अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? वो वाले डैमेजेस होते हैं एज अपोज टू रेगुलर डैमेजेस जिसमें ऑलरेडी अमाउंट स्पेसिफाइड हो जो कि पे करना होता है इन केस ऑफ ब्रीच। सेक्शन 75 नो, section 76 no, so the answer is none of these. Now let us move to the next slide. A sub bailee is a person to whom the actual possession of the goods is transferred by someone. बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट हमने पहले थोड़ा ब्रीफली हमने कैप्सूल 1 में देखा था। बेसिकली व्हेन यू गिव गुड्स टू समवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उसे बेलमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गाड़ी किसी को देते हैं ठीक कराने के लिए, तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ बेलमेंट। अगर आप इवन इफ यू आर गिविंग योर शूज फॉर रिपेयर, अगर आप अपने जूते भी रिपेयर पे दे रहे हैं तो वो भी बेलमेंट है। तो सब बेली कौन होता है? जिसको आप गुड्स देते हैं। सब बेली कौन होता है? जो आगे उसे दे देता है। तो इसमें देखते हैं, हु इज हिमसेल्फ नॉट ओनर ऑफ गुड्स, यस, हु हैज अ प्रेजेंट राइट टू पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ देम एज बेली। तो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। सो द आंसर इज सी, both. Now let us go to the next one. A successful plaintiff in an action for detenue is therefore entitled to the return of the goods or recovery of its value, and damages for determination is entitled to be assessed separately. अगर आपने गुड्स किसी का गलत डिटेन कर लिया, आपको गुड्स की वैल्यू भी देनी है जिस दिन आपने डिटेन किया, प्लस अलग से डैमेजेस भी देने हैं। सो द आंसर इज डैमेजेस एज वेल एज गुड्स। तो आंसर इज सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक विथ नेसेसिटीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। हमने पढ़ा था एज पर सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें माइनर या लुनेटिक के साथ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक केस पढ़ा होगा हमने, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, जिसमें ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। इसको याद रखेंगे, काफ़ी बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है जिसमें, तो इसमें तो ही इज़ नॉट, वो रिइम्बर्स नहीं हो सकता, नॉट रिइम्बर्स्ड इन एनी मैनर, नो, सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। ए सपोर्ट्स, ये है, A supplies the wife and children of B, not the lunatic, with necessities suitable to their condition in life. वो उसके वाइफ और चाइल्ड को गुड्स देता है। He is entitled to be reimbursed from B's property, not entitled to be given a share in B's property. Answer is A. ठीक है। A supports B's infant son. B promises to pay A's expense in doing so. ये valid contract है. This is a contract. So the answer is B. Now let us see. A surety is discharged if the creditor, without whose consent, unconditionally releases the principal debtor. The reason for this being, देखते हैं श्योरिटी कौन होता है। सोचिए एक पर्सन ए और बी, ए ने इससे बी से 1 करोड़ का लोन लिया। लोन की गारंटी करने के लिए इसने क्या कहते हैं, आपके बी ने सी को बोल, सी इसका गारंटियर हो जाता है, ठीक है, ए का। उसके बाद क्या होता है, तो अगर बी लोन नहीं दे पाता तो सी विल पे। अब ए ने, जब बी ने ऑलरेडी लोन पे कर दिया तो सी की लायबिलिटी इज फिनिश्ड, तो उसका खत्म हो गया। द रिलीज एक्सटिंग्विशेस द प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन ही खत्म। सो द आंसर इज ए। A transaction by which A promises to to pay B and C for consideration during their joint lives and after the death of one of them to the survivor
द कंसिडरेशन मूव फ्रॉम बी टू सी बट द अग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल थ्री। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट याद करेंगे, जिसमें बताया गया था बेसिकली दैट ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ वो उसी के राइट्स और लाइबिलिटीज के साथ डील कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। तो सिंस ऑल द थ्री साइन द कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज प्रिविटी बिटवीन, ये नहीं, ये गलत है, देयर वाज बट नॉट विद बी, देयर वाज प्रिविटी विद ए एंड बी ऑन वन साइड एंड सी ऑन द अदर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है ये? ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 माउंट्स ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे अप्लाइंग सेक्शन 47 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए नीड नॉट अप्लाई, अगर जब तक आप फिक्स प्लेस नहीं बताओगे कि डिलीवर कहाँ करना है, क्या अमेजोन को आप कोई एक्सटर्नल कोई भी एड्रेस दे सकते हो, आपको फिक्स बताना पड़ता है। सो सेक्शन 47 की भी रिक्वायरमेंट यही है दैट देयर हैज टू बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर डिलीवरी। तो एज पर दैट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं दूसरा। A undertakes to repay B a loan of 1,000 by 5 monthly installments with a stipulation that in case of default of payment of any installment, the whole shall become due. 1,000 रुपए का 5, 200, 200, 200, एक नहीं दिया तो दूसरा लायबल हो जाएगा। ठीक है, बाय वे ऑफ पेनल्टी। नो, दिस इज नॉट अ पेनल्टी, तो ये गलत ऑप्शन है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, this is also wrong. This stipulation is not by way of penalty, yes, and the contract may be enforced according, this is the correct answer। ये है correct answer इसका। अब हम ये देखेंगे, A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that B may give possession of that to C, to whom B has contracted to let it. A is informed that of the contract between B and C. A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and it has to be rebuilt by A, who in consequence loses the rent which he would have to pay, receive from C, and is obligated to make compensation to C for the breach of his contract. तो उसने लेट हाउस दिया, so he has to pay, तो A must make compensation to B as to C, all of them, उसको 3 compensation देनी पड़ेगी। जो उसने घर का तोड़वाई किया वो, जो डिले हुआ है उसका, तो दोनों सारे कंपनसेशन देनी पड़ेगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वाई? क्योंकि सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जिस पार्टी सफर कर रही है ब्रीच की वजह से, आपको उसको उस पोजीशन में डालना है जैसे कि ब्रीच कभी हुआ ही नहीं। तो ये याद रखना है। A degree holder is entitled to execution of B's goods, requires the officer of the court to seize certain goods representing them to be the goods of B. The officer seizes the goods issued to see the true owner of the goods. ठीक है, तो A is not liable because अगर goods अगर पैसे नहीं दिए, so he is entitled to seek the goods. So answer is A. A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him to his as his medical attendant to agree to pay an unreasonable sum for his services. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 16 बोलता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन किया है, जो बीमार आदमी है उसका डॉक्टर उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, तो ऐसा अगर कोई वो अनकॉन्शियंसेबल ट्रांजैक्शन करे तो उसकी लॉ में कोई मान्यता नहीं है। B employs undue influence, yes. So the answer is B. A merchant in Calcutta has an agent B in London to whom a sum of money is paid on with orders to remit it. B retains the money for considerable time. A in consequence of not receiving the money becomes insolvent. तो एजेंट लोग जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते थे, हायर एजेंट्स जो बाहर की कंट्रीज में भी हो सकते हैं उनके बिजनेस, तो बी उसका एजेंट था, ही डिड नॉट पे हिम मनी विच ही वाज सपोज्ड टू डू, उसकी वजह से वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो एजेंट की लायबिलिटी होगी। बी इज नॉट लायबल, नो दिस इज रॉन्ग, ही इज लायबल। बी इज नॉट लायबल फॉर एनी डायरेक्ट लॉस बाय वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, A merchant in England
directs B, his agent on Bombay, who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by a certain ship. B, having its power to send the cotton, omits to do so. The ship arrives in England. Soon after arrival, the price of cotton rises. ठीक है, B is not bound, नहीं, ये गलत है. अगर B is bound to make good to any profit he might have been made by the subsequent rise. Yes. Why? Because section 73 again कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको जो सफर कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच, आपको उसी पोजीशन में डालना है विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू एज अ रिजल्ट अगर वो ब्रीच नहीं होता. तो ये हो गया इसका आंसर. ये ओके. A money lender gives 100 to an agriculturalist, kisan, and by undue influence tendency to be execute a bond for 200 with interest at 6% per पर मंथ. तो वो क्योंकि वो गरीब आदमी है, मनी लेंडर उससे कुछ भी साइन करा देगा. अनड्यू इन्फ्लुएंस से विशिएटेड है. द कोर्ट विल नॉट सेंड द बॉन्ड असाइड. नो, दिस इज रॉन्ग. द कोर्ट मे सेट नो, नॉट मी. ठीक है, either I or B, none of these. Answer is none of these. This is the correct answer. A ship owner contracts with B to convey him from Calcutta to Sydney in A's ship sailing on the 1st of January, and B by one half of his passage money advance ले लेता है, does not set ship, and B after being detained in Calcutta for some time and thereby put to some expense proceeds to Sydney in another vessel and in sequence arrive to late loses sum of money. उसको जाना था सिडनी, जिस शिप से वो जा नहीं पाता है तो वो लेट पहुंचता है, प्लस ही हैज टू पे एक्स्ट्रा. तो A is liable to previous deposit with interest, yes, and the expense to which he is put by his detention, yes, and the excess जो इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसकी भी भरवाई करनी पड़ेगी. So this is the correct answer. A singer contracts with B, the manager of a theatre, for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents himself from the theatre and B rescinds the contract. वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है गाना गाने का, जानबूझ के वो नहीं आता है, सो और तो उसका लॉस होता है. सो B must A for the 5 nights on which he had sung. None of these. नहीं, only for the 6th, only for the time वो जब नहीं आई. So it's none of these. क्योंकि she came on the other time, so she is not liable to pay for that. A singer enters into a contract with B, the manager of a theatre, to sing at the theatre 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself. B is at liberty to put an end to the contract. Yes. Cannot. No, this is wrong. Either also. The answer is A. वो खत्म कर सकती है because she has willfully breached the contract. B has signified his acquiescence. Acquiescence का मतलब agreement. In the continuance of the contract and cannot now put an end to it, but is not entitled to compensation for the damage sustained by him through A's fill on the none of these. So answer is none of these. A tradesman leaves goods at B's house by mistake. गलती से goods छोड़ आता है. B treats the goods as his own. He is not bound. No, this is wrong. He is bound to pay partially. This is also wrong. He is bound to pay A for them. ये सही आंसर है. कोई आपके घर में goods छोड़ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि that will become yours. That ownership does not change merely because a person is careless. A, an agent engaged in carrying on for B a business in which it is the custom to invest from time to time at interest the money which may be in hand, omits to make such investment. Agent ने investment किया ही नहीं, which was his job. A need not make good. No, he has to make good. A can partially make good. No. A must make good B to the interest usually obtained. जो नुकसान की भरवाई किया, you have to pay for that. ठीक है,
ठीक है. A, an agent for the sale of goods having authority to sell on credit, sells to B on credit without making the proper and usual inquiries. B at the time is insolvent. एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी किसी को गुड्स क्रेडिट पे दे दिए तो एजेंट की लाइबिलिटी होती है. A must not make compensation. No, this is wrong. Partially make compensation. This is wrong. A must make compensation to his principal in respect of any loss. This is the correct answer. A insurance broker employed by B to effect an insurance on a ship omits to see that usual clauses are inserted in the policy. जो उसने केयरलेसनेस था, उसने देखे नहीं कि ठीक से थे. The ship is afterwards lost. In the consequence of the omission of the clauses, nothing can be recovered from the underwriters. A is not bound. No, this is wrong. A, partially bound. No. A is bound to make good loss. ये आंसर है. A surety for B makes a bond jointly with B to C to secure a loan from C. To be afterwards, C obtains from a further security for the same debt. Subsequently, C gives up the further security. A is partially discharged. A is discharged. A is not discharged. Surety का तब तक liability खत्म नहीं होता जब तक principal debtor जिसने actually loan लिया है he does not pay the loan. जब तक प्रिंसिपल डेटर ने अपना लोन नहीं दिया तब तक श्योरिटी भी नहीं जा सकता कहीं पे. A at Madras directs B to sell for him some cotton lying in a warehouse in Bombay and afterwards by letter revokes his authority to sell and directs B to send the cotton. B after receiving the second letter enters into a contract with C who known of this first letter but not the second for the same. B C pays, वो बिना अथॉरिटी के उसे सेल कर देता है. C's payment is not good as against है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी. So this is the correct answer. A owns a shop in Sirampur in Calcutta, living himself and visiting the shop occasionally. The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of shop and for paying them out of A's funds without A's knowledge. ठीक है, उसने A की knowledge के बिना उसके पैसे लिए. B has no implied authority to order goods. Yes, अगर authority नहीं है तो नहीं है. If you have to take permission, या तो आपके मास्टर को पता हो and he does not say anything, that is implied authority. इसमें नहीं है. Answer is A. A contracts to indemnify B against the consequence of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. This is not a valid contract. There is some contract of stipulation. जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो प्रोटेक्ट करने से कि अगर ये हुआ so I will protect you, that is a contract of indemnity. So this is a contract of the answer is A. A contracts to marry B, being already married to C and being forbidden by law to which he sub to practice polygamy. Hindus में and Christians में only marry once. तो जब तक मुस्लिम नहीं होते you cannot marry more than once. So if आप कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, that is void. Contract against law is void. ठीक है, none of these. ठीक है, this caused loss, so you have to, so it is not anything. A contracts to B with when B marries C. C dies without being married to B. This is a contract still can be for this contract becomes void. जब वो मर गया है, so contract cannot be performed, and as per section 56 of Contract Act, which says impossible act को आप enforce नहीं कर सकते. So there is no contract which is left. Okay. A contracts to sell and deliver 50 mounds of saltpetre to B at a certain price to be paid on delivery. A breaks his promise. ठीक है, वो प्रॉमिस तोड़ देता, नहीं देता. तो इज नॉट एंटाइटल्ड, ये तो गलत ऑप्शन है. ठीक है,
entitled to receive from A by way of compensation the sum, if any, by which the contract price does not fall short of the price for which B might have obtained 50 monosaltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. So this is the, जो नुकसान किया है, you have to compensate for that as per section 73 of our Indian Contract Act. A contracts to sell and deliver to B on the 1st of January certain cloth which B intends to manufacture into caps of a particular kind for which there is no demand except that the cloth is not delivered till after the appointment time and too late to be used that year in making the caps की delivery करनी थी जो उसने नहीं की. So you have to make good the price for which you contracted plus the damages जो उसको suffer हुए. So yes, so this is the A is the correct option. A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterwards declares war against the country in which the port is situated. So as per section 56 of Contract Act, अगर impossible हो गया है contract, अगर war हो गया है, so how can you perform a contract? So कोई liability बनती नहीं. Contract becomes void when the war is declared. Okay, so answer is C. A contracts to deliver to him at a specified price certain merchandise on board a ship which cannot arrive for a month, and B engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract. B does not pay within a week. Need not be performed. A promised to and needs to be performed. Need not be performed because ये reciprocal contract की बात कर रहा है 51 से लेके 54, जो कि कहता है कि जब तक the other person does not perform his end of the promises, you need not perform your end of the promise. उस principle के हिसाब से A is the correct answer. A contracts with B to grow a certain crop of indigo on A's land and to deliver to B at a fixed rate, and C guarantees A's performance for this contract. B diverts a stream of water which is necessary for irrigation and thereby prevents him from raising the indigo. वो guarantee stand करता है. A is liable. अगर आपने guarantee दी है, there are no ways of getting around it unless the guarantee is obtained by fraud. किसी ने या coercion. ठीक है. A contracts with B to repair B's house. B neglects or refuses to point out the places where the house requires repair. A is excused for non-performance of the contract if it is caused by such neglect. Obviously, as per section 52, 54 and 51, if the promisee does not perform his end of the promises, then promiser की liability नहीं होती. First, he has to tell कि contract कहाँ perform होना था. अगर वो बताएगा नहीं कि घर में where the repairs have to be done, how will he perform his end of the contract? So the answer is this thing B. ठीक है, because उसने refuse किया उसको. A delivers a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done. B is not entitled to retain the stone, obviously, till he is paid for. B is entitled to retain the store till he is not paid for the goods. B is entitled to retain the store till he is paid for the service. नहीं, even if you are not paid, अगर आपने अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दी और वो सर्विसिंग नहीं कराता, then also you cannot take his goods. So answer is D. A desires B, who owes him, to send him a note for ₹100 by post. The debt is discharged only when A receives the due amount. जब तक वो due amount नहीं देगा तब तक debt discharge नहीं होगा. Answer is A. A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering that B has bought for himself, may repudiate the sale. If he can show that he has dishonestly concealed, yes, there has been disadvantages to him. Disadvantage अगर हो आपको contract से आप नहीं निकल सकते, but अगर contract में fraud हो
तो निकल सकते हो. वाई? बिकॉज एज पर सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप्स बीइंग, इट इज बिकम्स void. A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. ठीक है, A cannot on discover has bought the house, compelled him at the price which he gave for it. A on discovery has bought the house, there's file a suit against him. वो कुछ नहीं कर सकता because it is not a fraud, it is not undue influence, so he cannot do anything. None of these. So answer is none of these. A directs B his solicitor. Solicitor मतलब lawyer. इंग्लैंड में कहते हैं solicitor. To sell his estate by auction and employ an auctioneer for the purpose. B names C an auctioneer to conduct the sale. C is a sub agent. हाँ, क्योंकि A ने अपने वकील को बोला, वकील ने आगे एक और बंदे को पकड़ा, तो वो सब एजेंट हो गया C. C is a sub agent. सब एजेंट है वो A का. A employs B to beat C and A agrees to indemnify against all consequences of the act. The bids into paid damages. आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया पीटने का, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अगेंस्ट लॉ, सो इट इज void ab initio. तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. नन ऑफ दीज. A employs B to recover 1 lakh rupees from C and lay it on good security. B recovers 100 lakh rupees, A and lays out 90,000 rupees. 10,000 रुपए रख लेते, but lays out 10,000 rupees which he ought to have known, they thereby loses 20,000. B is not entitled to remuneration. No. B is, he is entitled to be paid any. तो ये आंसर है. He cannot retain the 20,000 rupees. He has to give the full amount of money back. A engages B, a clerk, for to collect money for him. Clerk को बोलता है पैसे लाओ. B fails to account for some of his receipts and he causes to furnish security for his duly accounting. A does not acquaint C with B's previous conduct. B afterwards make default. The guarantee is not valid. The guarantee is invalid. क्योंकि उसको बताना था कि that previous clerk was a fraud. So the answer is guarantee is invalid. A entrusts B with negotiable instrument endorsed in blank. B sells them to C in violation of private orders. The sale is not good. The sale is partly good. The sale is good. The sale is not good. He did not have authority. एजेंट को चीज की अथॉरिटी नहीं दिया है, वो काम नहीं कर सकता. A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrance. Encumbrance मतलब बोला कि घर के ऊपर कोई लोन नहीं है. B thereupon buys the estate. B वो खरीद लेता है. The estate is subject to mortgage. वो बैंक के पास ऑलरेडी गिरवी था वो घर. B may avoid the contract. B may insist on and the mortgagee भी ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज वो ऑप्शन है जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है. तो इट्स आइदर ए और बी. A gives a recognition binding him in a penalty rupees 500 to appear on court a certain day. He forfeits his recognitions. He is not liable to pay the penalty. He is liable to pay the penalty. He is liable to pay the whole penalty. Answer is C. A gives B a bond for repayment of rupees 1,000 and repayment of 12% interest at the end of 6 months stipulated. In case of the interest will be paid at the rate of 75% from date of default. This is stipulation by way of penalty. Penalty cannot be recovered in form of damages. B is not entitled to recover. So answer is C. Question number 50. A gives C a continuing guarantee to the execution of rupees 3,000 for any oil supplied by B on credit. Afterwards, he becomes embarrassed and without the knowledge A and continue to supply B with ready oil for ready money and that the payment shall be applied to them existing between B and C. A is like अगर गारंटी दी है ऑयल सप्लाई का कि नहीं कर पाया तो I will do it, then you are liable. So answer is A. B, A guarantees C against misconduct of B in an office to which B is appointed by C and of which the duties are defined by an act of the legislature. By a subsequent act, the nature of the office is materially altered. Afterwards, B may misconduct himself. उसने जो guarantee दी थी, that was based on a particular thing. वो
मटेरियली चेंज हो गया तो उसकी गारंटी भी एक तरीके से खत्म हो गई. ए इज नॉट डिस्चार्ज, नो, दिस इज रॉन्ग. अगर गारंटी जिस चीज पे दी गई हो मटेरियली चेंज हो तो वो गारंटी डिस्चार्ज हो जाती है. ए इज डिस्चार्ज, आंसर इज बी. A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of rupees 100 for any tea he may obtain from to supply to C. B supplies C with tea for the value 100 and C B for afterwards. B supplies with 2 the value of rupees 2. C fails to pay. उसने चाय सप्लाई की गारंटी दी थी कि मैं चाय के पैसे दूंगा. चाय वाला हैज, अगर वो चाय नहीं पैसे दे रहा है, so then he has to pay. There are no two ways. So this is the correct answer. A guarantees payment to the extent of rupees 2000 for payment of rice. C applies rice less amount less than 2000. अच्छा, गारंटी दी गई थी 2000 रुपए की, वो कम देता है उससे, ठीक है. बट ऑब्टेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइस सप्लाई ही कैन रिकवर. सो अगर उसने कम अमाउंट का भी सप्लाई किया देन ऑल्सो ही इज बाउंड बाय द गारंटी. A having advanced money to during his minority upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence from amount greater than some age. A और B थे, A and B. A was the father, B उसका सन था. उसने जब वो माइनर था उससे 1000 रुपीज साइन ले लिए बाप ने. जब वो 18 साल का और उसने लिखा कि जब मैं तुम बड़े हो गए आई विल टेक अ बिगर अमाउंट, सो ही इज ए मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट होल्ड वैलिडिटी. तो इट इज ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस. आंसर इज बी. ए हायर्स अ हॉर्स इन कैलकाटा फ्रॉम एक्सप्रेसली टू मार्च टू बनारस. कलकत्ता से बनारस. A rides with due care but marches to Cuttack instead. The horse accidentally falls and is injured. घोड़ा हायर किया जाने के लिए कहीं और, बट वो जाता he goes to Cuttack. वो ड्यू केयर लेता है हॉर्स का, बट फिर भी हॉर्स इंजर्ड हो जाता है. A is not liable to make compensation for the injury. A is partially liable. A is not liable क्योंकि उसने ड्यू केयर लिया. अगर वो केयरलेस होता then he would make up. So answer is A. A hires B's ship to take in and convey it from Kolkata to Mauritius. A cargo to be provided by B. B receiving sir for his conveyance. A does not provide any cargo for the ship. तो कार्गो देता ही नहीं है जो देना था. A cannot claim the performance. जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो खत्म हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म. बाय बिकॉज सेक्शन 56 प्ले में आ जाता है जो कि कहता है ये जो इम्पॉसिबल हो, जब कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो व्हाट विल यू डू. सो इट्स फिनिश्ड. A is employed by B to buy from C certain goods of which C is the apparent owner and buys them accordingly. In the course of the treaty of the sale, he learns that goods really belong to D, but D is उसे पता नहीं था किसी और के goods है. So he is entitled to set off. So वो अपना नुकसान की भरपाई कर सकता है. That is the mean of set off. So answer is B. A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to him. A B को employ करता है debt recovery के लिए. A may adopt any illegal process. No, this is first. You cannot employ. A may not employ legal process. No. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering and may give a valid discharge for the same. Answer is C. वो legal use कर सकता है, not illegal. A leaves a cow in custody of to be taken care of. The cow has a calf. गाय रखी एक दोस्त ने, उसका calf हो गया. B is not bound to deliver the calf. B is bound to deliver the calf but not the cow. B is bound to deliver the calf as no. उसने सिर्फ cow रखा था, not calf. The answer is what? No. The answer is he has to deliver both the cow and the calf क्योंकि वो उसी का प्रोडक्ट है.
तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे. A lends a horse to B which he knows to be vicious. उसे पता है उसका horse is dangerous. Vicious मतलब dangerous. He does not disclose this horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is not responsible to B. B is partially responsible. A is responsible. ये question based है whether silence is fraud. Silence is fraud और नॉट पे बेस्ड है ये. बेसिकली साइलेंस इज ओनली फ्रॉड व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज. मतलब अगर आपने पूछा है कि वो इज इट विशियस, अगर उसने नहीं पूछा है तो कोई आपका राइट नहीं बनता. तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरीज सफर्ड. A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. This contract cannot be enforced by law unless and until A dies in C's lifetime. This contract cannot be until and unless C dies. So the answer is B. जब तक वो मरेगा नहीं तो contract cannot be enforced. A owes B 1,000 rupees upon a contract. B owes C 1,000 rupees. B orders to credit with C 1,000 in his books. But C does not assent to the arrangement. जब तक कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से नहीं घुसोगे, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, देन इट इज विशिएटेड बाय कोअर्शन, तो इट इज नॉट वैलिड. ठीक है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस. A owes B 2,000 rupees. B accepts some of A's goods in reduction of the debt. अच्छा क्या होता है, ये वेवर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो वो कहता है ठीक है आप मेरे कुछ गुड्स रख लो, तो आपने वेव ऑफ कर दिया अपना लाइबिलिटी. तो द डिलीवरी ऑफ गुड्स डज नॉट अमाउंट नो. हाँ, द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज अ पार्ट पेमेंट क्योंकि आपने अग्री किया है. सो आंसर इज ए. A owes B 5,000 rupees. C pays to B 1,000 rupees and B accepts them in satisfaction of his claim to A. So ये बेसिकली सेक्शन 62 की बात कर रहा है, जो कि नोवेशन की बात करता है कि अगर आपने 1,000 रुपीज़ किसी से लेने थे और आपने खुद ही उसका 200 रुपीज़ कर दिया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपये का ख़त्म और नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. आप पुराने के अंडर आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं. सो इट इज़ नोवेटेड. सो द आंसर इज this answer is agree payment is a discharge of the whole claim. Answer is C. A owes B amongst other debts 1,000 rupees upon a promissory note which falls due on the 1st of June. He owes B no other debt of that amount. On that first day A pays to B 1,000 rupees. ठीक है, the payment is to be equally to all the three debts. Equally divide होती है होगी इस केस में liability. So A is the correct answer. A owes money to B under a contract. The old debt of A to B is an end. It is agreed between that as his debtor. So they have made a new contract. When new contract has been made as per section 62, तो contract novate हो जाता है. पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू. सो ऑल द ओल्ड डेट्स आर वाइप्ड. सो आंसर इज none of these because there's a new contract in existence. Section 75 of the Contract Act, which is there supplementary as to section 55, no, because it talks about time as essence of contract. Section 39 and section 64. So section 39 because दोनों tandem में चलते हैं, because दोनों कहीं ना कहीं damages की बात करते हैं. Severance can be affected when the part severed can through it the pencil, white pencil, none of these, because severance is a concept of contract law. Since a contract is concluded by mere acceptance of offer, the terms of the intended or must be indicated with sufficient definiteness in the offer. It says the terms of the offer must be definite and certain. Which of the following cases the proposal must be sufficiently defined to remit the conclusion of the contract by mere acceptance? तो इसमें the acceptance should be very clear. ये हुआ था कॉफी वोट बैंगलोर बस इब्राहिम के कॉन्सेप्ट. द acceptance should be extremely clear. आप conditional acceptance नहीं दे सकते. So answer is A in this case.
Subject to a contract between the partners, the firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business. जो इंडेमनिफिकेशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स जो 3 पार्टनर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दैट जब फर्म के बिजनेस में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है वी विल प्रोटेक्ट ईच अदर, वी विल इंडेमनिफाई ईच अदर. तो आंसर इज ए. Subsection of section 16 of the contract requires that the court trying to consider which of the following are the relations between the donor and the donee such that the donor position to dominate the will of the other. Has the donor to obtain unfair? जब undue influence डिसाइड करता है कोर्ट अंडर सेक्शन 16 तो कोर्ट 2 चीज देखता है. वेदर वो फर्स्ट देखता है डोमिनेट द विल, बेसिकली the person should be able to control the other person. तो उस पोजीशन को कोर्ट एग्जामिन करता है. ऑल्सो दे सी वेदर देर इज एन अनफेयर एडवांटेज. तो कोर्ट सीज बोथ. लेट्स सी नाउ. Subsection of which of the following of does not shall not shall not affect the provisions of section 11 of the Indian Evidence Act, section 7, section 16, section 20. None of these, because section 7 talks about acceptance. Acceptance होना चाहिए contract का. Acceptance should be absolute. section 16 बात करता है undue influence की. सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक की. तो द आंसर इज नन ऑफ दीज. Suit by bailor against wrongdoer is dealt with under which of the following sections? Section 176, 179, 180, 178. Answer is 176. अगर आप बेलर अगर आपको कोई सामान गलती से रख ले तो आप अंडर 176 यू कैन सू देम, आप केस फाइल कर सकते हैं. टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी विद पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक मे अट्रैक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन इन अ रिट पिटिशन. रिट पिटिशन क्या होता है? रिट पिटिशन का कॉन्सेप्ट आप समझिए. रिट पिटिशन एक टाइप की पिटिशन होती है जो कोर्ट में फाइल होती है. इसकी खासियत ये होती है इट कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते. इफ द टर्मिनेशन इज अनरीजनेबल, इफ इट इज आर्बिटरी, इफ इट इज अनकॉन्शियस, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस तीनों केस में फाइल कर सकते हो. अगर आर्बिटरी हो, आर्बिटरी मतलब लॉ इज अगेंस्ट आर्बिटरीनेस. आर्बिटरीनेस मतलब मन मर्जी, मन मर्जी के हिसाब से नहीं होता, हैज टू बी अ रीजन. टर्मिनेशन इज आर्बिटरी, यू कैन फाइल अ केस. अगर अनकॉन्शियसेबल है, बहुत अनफेयर है, देन ऑल्सो, और अनरीजनेबल है, देन ऑल्सो. आंसर इज ऑल ऑफ देम. Terms of contract relate to statements, assertions, or representations contained in a written contract which relate to the subject matter of the contract and something to be done, to something not to be done, something to be done. जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट का ही होता है, उसी के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है. The acts or omission contemplated by section 134 of the Indian Contract Act may be those reflective of the Indian Contract Act. So it is not 63 because 63 talks about waiver. 55 talks about time as an essence of contract. 53 and 54 talk about reciprocal promises. तो बचता है क्या? 1 and 6. So answer is 1 and 6. C. The agency extends to receiving notice on behalf of its principal of whatever is material to be stated in the course. For this, the agent must be under duty to communicate. Information must be material. It must all of them. Information material होना चाहिए, duty होना चाहिए. Agent is not privy to fraud on the. Answer is all of them.
The agency type described in section 202 of the Contract Act, 202 जो होता है Contract Act, it cannot be revoked by the principal. This is wrong. Agency can always be revoked. It cannot be terminated by the death, unsoundness of mind, or either none of these. The agent may be disentitled to relief under two if the injury was of his own contributory negligence on account of common employment. Answer is A. अगर वो खुद ही नेग्लिजेंट रहा है तो उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी. अगर एजेंट से कोई अपने से मिस्टेक हुई है देन ही कैन नॉट सीक एनी काइंड ऑफ रिलीफ इन एनी मैनर whatsoever. The application of principles in section 45 of Indian Contract Act may be excluded by statutes, especially those related which provides that securities payable to one or more persons jointly. So the answer is A. The article of Fuller and Pedder on the Reliance Inter Contract Act adopted the method of viewing remedies for breach in terms of the interest which the remedies have to protect. Which of the following interests were identified by them? The expectation interest, reliance interest, the restitution interest मतलब भरवाई करना, putting in the same position as which you were put to before the loss. So the answer is all of them. The award of damages involves a detailed investigation of facts. It is not normally appropriate matter for a writ petition. हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में writ petition नहीं डाल सकते unless it is against the state. State मतलब government. ठीक है? It is not for a writ petition under but it is mixed in extraordinary circumstances when not yes, आप कॉन्ट्रैक्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो अगर बहुत कुछ अनरीजनेबल हुआ है, आर्बिटरी हुआ है, देन यू कैन गो फॉर अ रिट पिटिशन इन कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स आल्सो. आंसर इज बी. The balance of provisions of section 11 of the Contract 1872 is found in नहीं, section 11 talks about minor के साथ, तो इसमें से कोई इसका रिलेशन नहीं है because section 66, 67, 68 all relate to waiver and all these concepts. The branches section 32 of the Indian declares the age agreement of wager void. हाँ 30 कहता है जो वेजर का अग्रीमेंट होता है जुआबाजी that is void. जुआबाजी is illegal. You cannot have an agreement by wager, वो void माना जाता है. The basis of relief on the ground of economic in the case of Daichan Karkadia versus Oil and Arabica, the decision has been given in proceedings seeking interim injunction as to decide whether it ought to be issued. The decision can be sustained solely on the equitable on which the court may refuse to grant injunction. बाकी options देखते हैं इसमें. The effect of this decision on the contract, whether it is voidable for lack of is void against the is not clear from the okay. अगर आप ये कहो कि मैं बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन मेरी खराब है और कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहो सो इट हैज टू बी, तो वो देखना पड़ेगा. अगर आपको कोर्शन से आपको कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है तो देन इकोनॉमिक ड्यूरेस का प्ली वर्क करेगा. द कैपेसिटी ऑफ अ वुमन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग. Capacity of women ये गलत है. Women can contract, only a minor and lunatic cannot contract. The answer is none of these. The circumstances in which the creditor must make disclosure to the proposed surety are where the surety has asked specific questions, where the bank misleads, whether there is anything that might not be unnaturally true. So answer should be all of these in my opinion, all of them. So this is the answer. The conditions under which entitled to succeed his authority under the doctrine of necessity. ऐसा सिचुएशन हुआ कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा विदाउट जो उसकी अथॉरिटी से ज्यादा होकर, ऐसा सिचुएशन आया तो दैट ही कुड नॉट, ऐसा कुछ सिचुएशन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, सो तब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अट्रैक्ट होगी. यस वाज नेसेसरी दैट इट वाज दैट द ओनली रीजनेबल एंड प्रूडेंट. यस, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके अलावा. that he acted bona fide in the interest of the party. तो अगर वो अच्छे इंटरेस्ट से करे तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. The consideration for a family arrangement may be preservation of family property, preservation of peace and honor of the family, or the avoidance of litigation,
or avoiding the possibility of future dispute. In which of the following cases it was held? It was not held, it was held in the case of Drama versus Ramayana. Usually contract एक्ट में प्रिंसिपल है 25 कि कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. कंसिडरेशन इस केस में था कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. सो कोर्ट सेड दैट दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन. तो ये द क्रेडिटर में फाइल अ सूट एट द ऑप्शन only against the surety. In which of the following case it was held? अच्छा, अगर ऐसा होता है, there is A and B, B ने A से लोन लिया और B की श्योरिटी C ने दिया. जब B डिफॉल्ट करता है, A इंस्टेड ऑफ सुइंग B वो सिर्फ C पे केस कर सकता है. कैन ही डू इट? यस ही कैन. So this was held in the case of KC Sakaria versus Government of State of Kerala. No, it was Purbi Das versus Arun Kumar. ये उसकी मर्जी है कि वो श्योरिटी के पीछे आएगा या प्रिंसिपल डेटर के पीछे आएगा. Recently, Mr. Anil Ambani also faced the same issue. He was a guarantor for certain businessmen. The banks, instead of going for those businessmen, they went for Anil Ambani. The decisions of the expert or technical or commercial committees in scrutinizing under Section 10 of the Indian Code may be unless the decision is taken with malified. अगर कोई एक्सपर्ट ने मैलिफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन से लिया है डिसीजन, एक्सपर्ट्स ने भी, सो इट कैन बी सेट असाइड. यस, द डिसीजन इज आर्बिटरी. लॉ में आर्बिटरीनेस नहीं चलती. लॉ एंड आर्बिटरीनेस डू नॉट गो टुगेदर. सो द आंसर इज आइदर ए और बी. द डिफेंस ऑफ इनवैलिडिटी of contract for to must be unless it is patent allegations in the plaint or by the plaintiff. This question, which of the following cases of the representation of people's, this is some other topic. The doctrine of apparent authority applies where a person allows another, not his agent, to appear as an agent, where a principal allows more than actually he has. No, 2 is wrong. जब कोई जो एजेंट नहीं है वो अपने आप को एजेंट दिखाता है, सो दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट अथॉरिटी. आंसर इज ए. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें याद है. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जिनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ओनली दे कैन इन्फोर्स द राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता. So answer is that a person cannot acquire rights or liabilities to which he is not a party. So answer is A. The duty of disclosure is limited to case of disclosure मतलब बताना, unusual feature of transaction, unusual features of the risk. Both A and B. कुछ अगर unusual है contract में, risk में, then you have to disclose. So answer is C. Both of these. प्रिंसिपल और ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उबरामा फाइट्स कहते हैं इसको. उबराइमा फाइट्स मतलब अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मतलब आपको पूरा गुड फेथ से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है. ये इंश्योरेंस लॉ का पॉलिसी है. जब इंश्योरेंस लेते हो आपकी ड्यूटी बनती है टू डिस्क्लोज ऑल इलनेस. दैट इज उबरामा फाइट्स. देयर हैज बीन अ फेलियर बाय द टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट. देयर हैज ऑन द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. आंसर इज ए. अगर आपने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया, सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ ओबरामा फाइट्स. द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस. सो द एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी वेदर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्ट और बिजनेस, थिंग्स विच आर इन टू बिजनेस, द यूजुअल कस्टम्स ऑफ द ट्रेड. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. The extent of liability of an indemnity depends on nature of terms of the contract. Yes, which must be governed by its own facts. Both A and B. Indemnity depends on case to case. The final draft of the Indian Contract Act. किसने बनाया हुआ Indian Contract Act? Both A and B. Pollock as well as Stephen. So answer is D. Sir Frederick Pollock. The 11 of the Contract Act relating to personal. 11 of the Contract Act क्या आता है? Minor and lunatic cannot contract. So preventing them from doing this. So answer is B. वो कहता है जो भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर या लुनेटिक से, दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू. ठीक है. द जनरल प्रिंसिपल इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन. कंसिडरेशन इज एक्सेप्टेड एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस. बोथ ए एंड बी. आंसर इज बोथ ए एंड बी.
the grounds guarantees right to indemnification is a right to be reimbursed the amount which actually paid because is entitled to full. A is true, but A is false. No. B, both A and 1 and 2 are true. Thank you. This we come to the end of this session. I hope that you were able to gain something, and it will be my this thing. I really hope that these sessions helped you. आपका help हुआ इससे थोड़ा बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ interact करके through the digital medium, of course. All the best for your coming PCS exams.